Speaker of the Lok Sabha, and Shri Harivansh, Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Excellencies, Honorable Prime Minister is now being escorted to the Central Hall of Samvidhan Sadan. Excellencies, ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. You are requested to please keep standing for the national anthem. Namaskar. We are deeply honored to host the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, a forum that strengthens democratic institutions through dialogue, cooperation, and shared values. On this occasion, it is my honor to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji. Dr. Tulia Axon, President, Inter-Parliamentary Union. Dr. Christopher Kalila, Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association. And Shri Harivansh, Deputy Chairman, Rajya Sabha. On behalf of the Government of India, I extend a warm welcome to the speakers and presiding officers and respected parliamentarians of the Commonwealth and distinguished guests. This historic hall is a symbol of India's constitutional journey, and today it bears witness to this largest ever CSPOC conference, a confluence of parliamentary wisdom from across the Commonwealth with the sole objective of strengthening parliamentary democracy and empowering the democratic institutions. May I now invite Shri Harivansh ji, Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha, to kindly deliver the welcome remarks. Honorable Prime Minister Adarniya Narendra Modi ji,
Honorable Speaker Lok Sabha and Chairperson of 20th CSPOC Sri Om Birla Ji, Honorable President IPU Dr. Tulia Akshan Ji, Honorable Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association Dr. Christopher Kalila Ji, Honorable Speakers and Presiding Officers of the Parliaments of Commonwealth countries, Excellencies, Honorable Ministers, Government of India, Honorable Presiding Officers from States Legislatures in India, Honorable Members of Parliament India, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Namaskar, good morning. It's my great privilege and honor to extend a warm and heartfelt welcome to all of you to this historic Central Hall of the Parliament of India. An edifice that stands as a living symbol of India's democratic journey, constitutional values and parliamentary traditions. We are deeply honored by the presence of, apart from the President IPU and the Chairperson of CPA, a galaxy of speakers and presiding officers from across the Commonwealth, representing diverse nations, cultures and parliamentary systems. Yet we are united by a shared commitment to democracy, the rule of law and representative governance. Excellencies, your presence here today reaffirms the enduring bonds of friendship and cooperation that connect our family of nations. My sincere gratitude to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for gracing the opening ceremony, which reflects his deepest commitment to the values of parliamentary democracy. This Central Hall has been witness to many defining moments in India's history. From deliberations of the Constituent Assembly that gave birth to our Constitution to historic address by global leaders. It's therefore especially meaningful that this hall today hosts distinguished custodians of parliamentary democracy from across the world. India's parliamentary system draws strength from age-old tradition of dialogue, debate and dissent. Values that are central to a true democracy. Representative and deliberative bodies of India have existed and flourished for millennium. Your presence here from different regions of the globe reinforces the India's guiding philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family. Forums such as the CSPOC provide an important opportunity to exchange experiences, share best practices and collectively reflect on evolving challenges facing democratic institutions, be it in strengthening legislative oversight, enhancing inclusivity, embracing technology or deepening public trust in democratic processes. As presiding officers, we play a pivotal role in upholding the dignity of legislatures, ensuring fairness in proceedings and safeguarding democratic norms. Your leadership is central to nurturing vibrant, responsive and futuristic parliaments that truly reflect the aspirations of the people they serve. We hope that interactions during this conference will further strengthen parliamentary cooperation, foster mutual learning and contribute meaningfully to the advancement of democratic governance across our nations. On behalf of the Parliament of India, I once again extend a warm welcome to all distinguished delegates. May your stay in India be comfortable, enriching and memorable. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Honorable Deputy Chairman Shri Harivansh, for your gracious opening remarks. Excellencies, may I now invite Dr. Christopher Kalila, Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association, to address this distinguished gathering. Please welcome Dr. Christopher Kalila. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha, Shri Harivansh Nayaran Singh, the IPU President, my colleague, Honorable Dr. Tulia Akshan, Speakers and Presiding Officers, colleagues, Members of Parliament, if there are any in the House,
distinguished ladies and gentlemen, Namaste, good morning. Let me begin by expressing how delighted I am to address this 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth here in Delhi. And Mr. Chairman, on behalf of the Commonwealth Parliamentary Association, I would like to extend my deep and sincere gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for gracing this occasion, and also to the Speaker and Parliament and the people of India for their warm hospitality. I speak here as a Member of Parliament from Zambia, as a matter of fact, a backbencher. It is wonderful to be hosted in this historic city, which has long been a center of democratic dialogue and parliamentary tradition. As a parliamentarian, I am an avid reader of a book entitled Parliamentary Practice and Procedure by Kul and Shakda, which focuses on the Lok Sabha. Alongside that, I'm also an avid reader of Erskine May, which focuses on the House of Commons. It's great to see the Speaker of the House of Commons here this morning. This is a book about the functioning of the Lok Sabha, and it's widely used in the Commonwealth. I'm therefore honored to step in the Lok Sabha today. Indeed, it is an honor to be in India, the biggest democracy in the world, also known as the mother of democracy. The Commonwealth, as many of you may be aware, is home to more than 2.6 billion people, and half of these live in India. It is therefore befitting that today we are meeting here in India. Honorable Prime Minister Dan Gayat, thank you very much for hosting us here. This conference brings together those entrusted with the stewardship of our parliaments, and as speakers and presiding officers, as has already been alluded to, you play a vital role in upholding constitutional order, safeguarding parliamentary independence, and ensuring that our institutions remain effective, inclusive, and respected by the citizens that we serve. At a time of rapid political and social and technological change, that responsibility has never been greater. Across the Commonwealth, our parliaments, as some of you may know, are facing shared challenges, among others, declining public trust and harnessing the benefits of technological advancements while mitigating the risks they pose, and growing pressures on the security and well-being of members of Parliament and parliamentary staff. On behalf of more than 17,000 parliamentarians across the Commonwealth, I want to be the first one to appreciate you this morning and to say thank you to all of you, the speakers and the presiding officers, for the work that you continue to do, to serve, to mentor, to preside, to be arbiters over the affairs of parliaments in the Commonwealth. Indeed, I say thank you. And coming from the Commonwealth Parliamentary Association Secretariat, we are only there to serve you. The CPA belongs to you. It belongs to you, and I'm saying thank you because you have kept it going. And with the changing political order, please continue to hold the CPA together, as you have always done. You vote out budgets, you send us on these trips, we come to meetings. If you do not do that, there would be no CPA. So you are the CPA, and thank you to see all of you in record numbers as I'm seeing this morning. Yet we also see remarkable innovation and resilience in many of you. Across the Commonwealth, legislators are strengthening public engagement through digital outreach, youth parliaments and civic education programs, modernizing procedures by introducing hybrid sittings, electronic voting, and enhanced committee scrutiny, and reforming institutional practices to improve transparency, inclusion, and responsiveness.
These adaptations demonstrate how Commonwealth parliaments continue to evolve while remaining firmly grounded in core democratic values. This conference, therefore, provides a unique and valuable space for honest and extensive exchange. It allows us to learn from one another's experiences, to share best practices, to reflect collectively on how we can better serve our citizens in the Commonwealth, which is a club of friends brought together by deepening democratic values, as we have been informed by the previous speaker. The discussions over the forthcoming days will address issues that go beyond national boundaries and speak to the health of parliamentary democracy across our Commonwealth. The CPA remains committed to supporting CISPOC in this work through cooperation, capacity building, and the sharing of knowledge across our diverse membership. I encourage all participants in this week's program to engage openly and constructively and to take full advantage of the collective wisdom that subsists in this room. I further want to emphasize that speakers and presiding officers are the glue that holds CPA together. Their commitment and dedication to the work of the CPA is what drives and keeps the CPA relevant among its member parliaments at a global stage. It is through your commitment, our speakers and presiding officers, that subscriptions are paid, that your parliaments participate in CPA conferences, capacity building, etc., etc. Your role, therefore, in CPA is indeed invaluable. On this note, I wish you a productive and successful conference, and once again, I thank our hosts, particularly Prime Minister Modi, for the highest political will to come and attend this conference. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you. Thank you, Dr. Kalila, for your insightful reflections and also for reaffirming the spirit of parliamentary cooperation within the Commonwealth. Excellencies, I now have the honor of inviting Dr. Tulia Ackson, President of the Inter-Parliamentary Union, to address the conference. Your Excellencies, Honorable Speakers, Presiding Officers, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Let me also join my colleague who has just left the podium to thank the Indian authorities, primarily the Prime Minister, but also the Speaker of the Lok Sabha for their hospitality. We have been very well received. Thank you so much. It is a great pleasure to be here in New Delhi with you for the opening of the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth. I am very pleased to see so many of you and some familiar faces, including colleagues who we met recently at the World Conference of Speakers of Parliament in Geneva last July. I am honored to be here representing the Inter-Parliamentary Union, the global organization of parliaments. For more than 130 years, the IPU has believed in parliamentary diplomacy and in the role of parliaments in promoting peace, democracy, sustainable development, and so many other issues. I am also grateful to our hosts for bringing us together at such an important moment. Dear colleagues, dear friends, we meet at a critical moment. The year 2026 has begun with concerning developments that put forth a painful reminder of how fragile and uncertain the international environment has become. At the international level, multilateralism is increasingly judged not by the values it upholds, but by how quickly it reacts
or how visible its actions appear. Patience, compromise, and long-term cooperation often struggle to compete with demands for immediate results. Quiet diplomacy, careful negotiation, and consensus building can seem slow in a world that rewards urgency and spectacle, even though these are precisely the qualities that have sustained international cooperation over time. Similar doubts are being cast on democracy itself. Many citizens question whether democratic institutions can still respond effectively to their concerns, whether they can deliver fairness, stability, and opportunity in a rapidly changing world. When expectations rise faster than institutions can adapt, frustration grows. And when trust weakens, the very foundations of democratic life begin to feel uncertain. These pressures are not separate. They mirror one another. The doubts we hear about multilateralism on the global stage echo the doubts we hear about democracy at home. In both cases, institutions are expected to move faster, to be more visible, to deliver immediate answers. And in both cases, the quieter work of dialogue, procedure, and compromise is too often and too easily mistaken for weakness. This is why, dear colleagues, dear friends, our meeting here matters, and matters now. Conferences like this, one sits precisely at the intersection of these pressures. As speakers and presiding officers, you operate where domestic democracy meets international cooperation. You confront the same forces that challenge both multilateralism and democracy alike, namely polarization, technological disruption, declining trust in institutions, and rising expectations from our constituents. Over many years, I have seen how IPU assemblies bring together parliaments from every region and tradition, with 183 member parliaments and still counting. We are truly a global organization. And again and again, we are reminded that while our contexts may differ, our challenges are increasingly shared. This is what gives real value to gatherings such as this one. They allow us to listen to one another, to exchange experiences, and to learn how others are navigating these difficult times. In other words, they give us the space to step back from our daily responsibilities and reflect on the deeper meaning of parliamentary leadership, because common problems require common solutions. The topics we will talk about in the next few days are very important. We will discuss intelligence, social media, citizen participation, and the well-being and security of our members in our parliaments, but also staff. All these things make us ask this question: how can we make sure that democratic institutions stay strong and trusted in a world that is changing so fast? But I think, dear colleagues, dear friends, that this is also a question that reaches beyond our national institutions and speaks directly to the international order we are part of. As the conference begins, I hope it offers not only reflection, but also direction.
of where we would want to go, considering the challenges that we go through, that the world is facing, and what we have just witnessed at the beginning of this year. I look forward, dear colleagues, to the discussions ahead and to the insights that we will shape together that are going to shape the entire parliamentary community of the world. And IPU is ready to listen, to learn, and to take at IPU what we will hear, what we will learn from here. I thank you for listening. Thank you, Dr. Jackson, for your thoughtful address and also for emphasizing the importance of strengthening the bridge between the global parliamentary institutions. Ladies and gentlemen, may I now request Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker of the Lok Sabha and Chairperson of the 28th CSPOC, to deliver his address. राष्ट्रमंडल देशों के 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आईपीयू की प्रेसिडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल के अध्यक्षगण, माननीय संसद सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सबके लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहां एकत्र हुए हैं, जहां हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। माननीय प्रतिनिधिगण, राष्ट्रमंडल देशों के इस संसदीय परिवार में विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारियों को वैश्विक महत्व के वर्तमान मुद्दों पर एक साथ लाने की क्षमता है। आज विश्व अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एआई और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गलत सूचना, साइबर अपराध और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार कर उसका उचित समाधान निकालें। इथिकल एआई और प्रामाणिक और जवाबदेही
सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस सम्मेलन में हम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और ठोस नीतिगत निर्णय भी लिए जाएंगे ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में एआई और सोशल मीडिया के आदर्श उपयोग की कार्य योजना तैयार कर सकें। मुझे खुशी है भारत की संसद और विधान मंडलों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है और उन्हें हम पेपरलेस भी बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमने अपनी सभी विधायी संस्थाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पारदर्शिता नई मिसाल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश की सारी विधान मंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। इस सम्मेलन में हम पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और न्याय संगतता पर और जनता में संसदों की विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जनता की दृष्टि में संसद की विश्वसनीयता और गौरव सदैव अक्षुण्ण रहे। मुझे आशा है इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होंगे उससे हम विधायिका के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के सामूहिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ होने वाली चर्चा से हम संसदीय प्रक्रियाओं को और बेहतर बना पाएंगे और सांसदों में जनता की भागीदारी और उनका विश्वास और अधिक बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर पधारे आज तक के सीएपीएसयू के सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों को यहाँ पर आने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार। श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा अध्यक्ष 28th CSPOC, distinguished speakers and presiding officers from across the Commonwealth, ladies and gentlemen, at a time when democratic institutions are being reshaped by dialogue, inclusion and cooperation, it's my honor and privilege to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to share his vision and address this distinguished conference. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India. लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष तुलिया एक्शन जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर कलीला जी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए स्पीकर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अन्य डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, in a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today. Friends, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं,
वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। कुछ समय पहले ही भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया, डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था। भारत में भी संकट कम नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों के बीच भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई। लोगों का हित, लोगों की भलाई और उनका कल्याण, ये हमारा संस्कार है और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। फ्रेंड्स, many of you know India as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to vote. This number is larger than the population of some continents. There were more than 8,000 candidates and over 700 political parties. The elections also saw record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating
but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. Indian democracy is also rich in diversity. Hundreds of languages are spoken. There are over 900 television channels across different languages. Thousands of newspapers and periodicals are published. Very few societies manage diversity at this scale. India celebrates such diversity because our democracy has a strong foundation. Our democracy is like a large tree supported by deep roots. We have a long tradition of debate, dialogue, and collective decision-making. India is called the mother of democracy. Our sacred texts, the Vedas, are over 5,000 years old. They refer to assemblies where people met to discuss issues. Decisions were taken after discussion and agreement. We are the land of Bhagavan Buddha. The Buddhist Sangha used to have open and structured discussions. Decisions were taken through consensus or voting. Further, there is a 10th century inscription from the Indian state of Tamil Nadu. It describes a village assembly that worked with democratic values. There were clear rules for accountability and decision making. Our democratic values have been tested by time, supported by diversity, and strengthened generation after generation. Friends, कॉमनवेल्थ की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा भारत में बसता है। हमारा प्रयास रहा है कि भारत सभी देशों के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। कॉमनवेल्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के क्षेत्र में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। भारत आप सभी साथियों से सीखने का निरंतर प्रयास करता है और हमारा ये भी प्रयास होता है कि भारत के अनुभव अन्य कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के काम आए।
फ्रेंड्स, आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में रखा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहां भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। फ्रेंड्स, इस बार की कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। इसमें स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम लोगों को देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ी भूमिका से जोड़ने का काम है। भारत की संसद पहले से ही ऐसे काम को कर रही है। स्टडी टूर्स, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप के माध्यम से जनता को संसद को और करीब से जानने का मौका मिला है। हमने अपनी संसद में AI की मदद से डिबेट्स और हाउस प्रोसीडिंग्स को रियल टाइम में रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया है। संसद से जुड़े रिसोर्सेज को भी AI की मदद से यूजर फ्रेंडली बनाने का काम हो रहा है और इससे हमारी यंग जनरेशन को भी संसद को समझने, उनको बेहतर अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब तक मुझे आपकी संस्था से जुड़े 20 से ज्यादा सदस्य देशों में जाने का अवसर मिला है। कई सांसदों को संबोधित करने का सौभाग्य भी मिला है। जहां जहां मैं गया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हर बेस्ट प्रैक्टिस को लोकसभा के हमारे अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन महोदय के साथ आकर के तुरंत अपने अनुभवों को साझा करता रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ये कॉन्फ्रेंस सीखने और सिखाने के इस क्रम को और समृद्ध करेगी। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, for your profound and forward-looking address, which will undoubtedly inspire the parliamentary democracies across the Commonwealth. Ladies and gentlemen, with this, we come to the conclusion of the inaugural ceremony. Distinguished dignitaries seated on the dais, and all the speakers and presiding officers of CSPOC are requested to now kindly proceed to the courtyard number 9 on your right-hand side for a group photograph with the Honorable Prime Minister. All our dignitaries seated on the dais and all the speakers and presiding officers of CSPOC, you're all requested to kindly proceed to the courtyard number 9, which is on your right-hand side, behind me, that is on your right-hand side,